Hello, everyone, and welcome to the next episode in the series. Between the episodes, I went up and got enough souls to level up my endurance. एक पॉइंट से बढ़ा ली मैंने. So yes, let's head back downstairs. And in this episode, we're gonna tackle the four kings. Again, as I said pehle, okay, the four kings is a massive DPS check. कोई skill नहीं लगती इस boss में. As long as you can tank damage and deal good damage, you're good to go. And I think the build that we've made is sufficiently good for this boss fight. But आगे तो बाद में देख के पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं. You already know where the boss is. पिछले एपिसोड में I think मैंने फ्लैश कर दिया था कहाँ पर है boss. But you could head straight down to the boss, but I would not recommend that because the enemies यहाँ पे aggro बहुत दूर तक जाता है, so they can follow you काफ़ी दूर तक, and if they gang up on you भाई then you're done for. तो भाई as usual go and clear enemies on your way, and since we already have 20 Estus we should be good to go. दो तीन अगर यूज़ भी हो गए रास्ते में तो इतना कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं. Again parkour and backstab. Holy shit भाई. Fanta. अरे यार. नाइस जल्दी. बहुत बढ़िया. अब क्या करोगे? And the jagged ghost blade finally. You can use the jagged ghost blade to kill these apparition type enemies and you won't need the transient curse. But again, it's better to just take the curse than to upgrade the blade इतना कि you're able to do the one shot damage जितना भी कर पा रहे हम curse के साथ. ये सोल जहाँ पे कैसे पहुँचे वो मैं नहीं बताऊँगा. Let's just assume कि थोड़ी editing हुई है इस episode में, so I don't look like an idiot. So yes, इसके नीचे आता है हमारा abyss. Make sure you've put on the Covenant of Artorius. हम इसमें fat roll कर रहे हैं अभी. But no worries, it's gonna be chill. As long as यहाँ पे कोई item नहीं है. I don't think यहाँ पे कोई item होता है. Anyways, just drop down. Damn. Drop down into the abyss. Yes. Oof. And there we go. Please अच्छा डैमेज आ जाए. This is the only attack pretty much जिससे बच के रहना है थोड़ा. Oh god, बहुत ज़्यादा नहीं है अटैक मेरा. Oh, this boss fight is gonna be a pain. I think we can unequip the ring abhi. Oh no, I can't. Oh shit.
ये तो बहुत भारी मिस्टेक हो गया. I thought कि once you land in the abyss, then you're free to. Yeah, I figured. I was taken by the abyss. Thank you, Captain Obvious. So, ये तो हम लेके ही चलेंगे अब. रिंग तो लेके चलेंगे. Let me see if I can. It's still too heavy. Oh my god. अब क्या किया जाए? Brigand armor looks very goofy. I'm not gonna wear it. Silver Knight. Huh. But if this works, then I'll make this work, I guess. It kind of looks. The helmet looks very goofy. Why? This still looks better. I fucking knew it. भाई ये एक या दो अटेम्प्ट वाली बॉस फाइट नहीं होगी मेरे लिए. And I think मैं इस बॉस फाइट के लिए I'm gonna switch back to my claymore just for the reason कि it's faster. Send. Wait. I feel like an idiot. कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं. It's all okay. It's all chill. It's all zen. कोई नहीं guys, मुझे स्ट्रेस नहीं होता. मैं बियर बाइसेप्स देखता हूँ. I'm the most chill guy out there. I am performatively chill. You know what? I'm gonna try and avoid all these enemies. हो गया भाई. हट जा भाई, तू सामने से हट जा बिल्कुल मेरे. अरे बट वही है भाई, डैमेज तो भर के लूँगा यार मैं फिर इससे. कुछ नहीं हो रहा भाई, कुछ नहीं हो रहा. बस भागो भागो भागो. वो रही मेरी सोल्स. ओ नहीं 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 नहीं, वन शॉट है ये, वन शॉट है भाई. ओ वो आई थॉट ये.
ओ गॉड, नहीं नहीं नहीं। थोड़ी तो फैंटा बनती है भाई। ओ फैंटा फैंटा फैंटा। अरे यार, I'm kind of close. जिंक्स नहीं करना, नहीं नहीं, I'm not close. कुछ नहीं हुआ, there's nothing happy. Oof, finally. हाँ, दूसरा सपोला आ गया है। Basically, now I think it's. I prefer to talk to the snakes after this point. I'll tell you why in just a second. भाई इंड्योरेंस की ज़रूरत तो बहुत भारी है, बहुत भारी ज़रूरत है। व्हाट एल्स? हटाओ, इसे भी हटाओ। आई डोंट नीड दिस। ये शायद बाद में इसका भी काम हो गया। थ्रोइंग नाइफ रख लेते हैं, टट्टी भी नहीं रखनी भाई। ट्रांजिएंट कर्व से भी रखते हैं। ठीक है, लेट्स गो। नाउ टॉक टू हिम। Greetings, undead warrior. I am the primordial serpent, Darkstalker Khan. I can guide thee and illuminate the truth. The truth I shall share without sentiment. After the advent of fire, the ancient lords found the three souls, but your progenitor found a fourth, unique soul, the Dark Soul. रोल क्रेडिट्स भाई। Your ancestor claimed the Dark Souls and waited for fire to subside. Soon, the flames did fade, and only dark remained. Thus began the Age of Men, the Age of Dark. However, Lord Gwyn trembled at the dark, clinging to his age of fire, and in dire fear of humans, and the Dark Lord who would one day be born amongst them. Lord Gwyn resisted the course of nature by sacrificing himself to link the fire and commanding his children to shepherd the humans. Gwyn has blurred your past to prevent the birth of the Dark Lord. I am the primordial serpent. I seek to right the wrongs of the past, to discover our true Lord. But the other serpent, Frapt, lost his sense and befriended Lord Gwyn. Undead warrior, we stand at a crossroads. Only I know the truth about your fate. You must destroy the fading Lord Gwyn, who has coddled fire and resisted nature, and become the fourth Lord.
so that you may usher in an age of dark. It doesn't really matter यहाँ पे yes या no कहें, because whatever you do, you can still choose to link the flame or become the Dark Lord at the end. So I've talked to him, I'm gonna say yes, but मैं end में decide करूँगा कि what really is my decision. To be honest, the morally right decision is to become the Dark Lord, because I'll explain later. But since Dark Souls 3 भी exist करता है, it is continuity maintain करने के लिए I think linking the first flame makes the most sense. But उसका भी एक work around है lore wise, which I'll tell you in just a second. Very well. I shall now guide you to Gwyn's prison. Be still, and trust thine flesh to me. And now he's gonna swallow you whole. Gawk. Gawk gawk. It's goofy This ass. is Gwyn's prison. Now, place the Lord vessel upon the altar. Again, do as he says and place Lord Vessel. Let's go. Oh shit, I wanted that sewer wala helmet for the cutscene. Fuck. तो क्वेश्चन इज ये इतना बड़ा घड़ा ये लेके कब घूम रहा था? सॉरी, कढ़ाई, ये कढ़ाई कहाँ लेके घूम रहा था? और इज दैट द रीजन ये कढ़ाई ब्राउन है? लेट्स गो. अभी यहाँ पे और कुछ नहीं करना है प्लेस करने के बाद. यू गो एंड टॉक टू हिम. Very well. Once the vessel is filled with souls, the gate to Gwyn shall open. Seek Grave Lord Nito, the Witch of Izalith, and the traitor Seath the Scaleless. Fill this vessel with their souls. Then the gate will open, so that you may kill Gwyn. Are you ready? Then let us return to the abyss, and trust thine flesh to me. Again, it's a weird feeling being swallowed. So, go ahead and talk to him again. If you wish, I shall grant the art of life drain, the legendary power of the Dark Lord. It can preserve your humanity while undead, and cast off the shackles placed upon your brethren. So you can enter the Covenant again. It's more trophy related. But talk to him. Undead warrior, to speak now is premature. It begins with your retrieval of the Lord Vessel. Enter the Covenant. And Dark Hand. Let's go. Ask for Covenant item. कुछ नहीं है. Offer humanity. अभी से कुछ offer नहीं करना है. Farewell. Let's just... Okay, let's try talking to him again since we've joined What his is it? Covenant. They failed, every last one of them. They were strong, but saw not the truth. I am certain. Mm-hmm.
may fail. ठीक है, all right. So, Farewell. bye, man. So, now I'm gonna walk back to the Firelink Shrine, and I think this is where I'll end the episode. So, मैं तुम्हें बेसिकली थोड़ा स्टोरी का जेस्ट दे देता हूँ. द वर्ल्ड ऑफ डार्क सोल्स का जो वर्ल्ड है, ये इट्स वेरी साइक्लिक इन नेचर. तो अभी तक मतलब पास से प्रेजेंट टाइम तक हम एज ऑफ फायर में जी रहे हैं. और एज ऑफ फायर ग्विन जैसे जो लॉर्ड्स हैं, ये इस एज ऑफ फायर को मेंटेन कर रहे थे. पर जब एज ऑल थिंग्स कम टू एन एंड, जब एज ऑफ फायर भी नेचुरली एंड होने लगी थी, ये बात ग्विन से झेली नहीं गई. सो ही बेसिकली सैक्रिफाइस हिमसेल्फ. सैक्रिमन ही डिडंट किल हिमसेल्फ. ही बेसिकली जो उसके अंदर जो फायर सोल ऑफ सिंडर थी, बेसिकली जो डार्क सोल्स थी का वैसे टर्म है, वो यूज़ करके उसने उस फायर को ज़िंदा रखा. एंड ही एक्सटेंडेड द एज ऑफ फायर बियॉन्ड इट्स नेचुरल पीरियड. तो सिंस ही स्ट्रेचिंग द एज ऑफ फायर थिन नाउ, दैट्स वाई यहाँ पे अनडेड कर्स फैल रहा है. जो हम भी पहले अनडेड थे, जो कपोषित लोग हैं, ये सब पहले नॉर्मल इंसान हुआ करते थे, पर नाउ दे आर अनडेड. तो यहाँ पे इस गेम के एंड में वी विल हैव टू चॉइसेस, ईदर टू लिंक द फ्लेम एंड इस एज को फिर और खींचो, और ज़्यादा खींचो, विच डज नॉट लीड टू गुड थिंग्स एज आई टोल्ड यू, या become the lord of dark, and sorry, become the dark lord and end this age and usher in the age of darkness, which should be the natural thing that should have happened by now. So वही है, it's, you should listen to the dialogue and it's basically it's upon you कि तुम्हें क्या करना है, what do you think is right. So the thing is कि if you choose to link the flame, then Dark Souls 1 की story will flow perfectly into the Dark Souls 3 की story. Dark Souls 2 is not, मतलब इस story का part नहीं है. Dark Souls 2 is its separate story altogether. But हाँ, it flows perfectly into Dark Souls 3 की story. However, even if you choose to become the Dark Lord and usher in an age of darkness या जो भी है, that means कि तुम्हारी जगह कोई और, some other hollow, some other undead rose up and went on the same journey that you did, and he linked the flame and he became one of the lords. तो it's really ऐसा नहीं है कि तुम्हारे हाथ में ही है या तुम ही कर सकते हो फर्स्ट फ्लेम को लिंक, ऐसा कुछ नहीं है. अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और कर देगा. एंड द स्टोरी डार्क सोल्स 3 की will happen any which ways. So yeah, that's it for this episode, and I will see you guys in the next one.